of reflective communications. The idea of reflective communications is coming from, let me give you a little backdrop. So awareness to wellness was like a giant, was like a giant जो गंगा है, जो आसमान से उतर रही है और वो सब बहा के लेके जाएगी. And that was the feeling I had about the content that A2W has, and A2W is willing to give it to the world. उसमें ये बात हुई कि people were getting confused. अरे ये तो parenting भी करती है, अरे ये तो ये भी करती है, अरे ये तो ये भी करती है, ये तो ये भी करती है. And in this whole bargain, people thought that I was a jack of all trades, master of none. And because of this, I got thinking that if this is the message that is going out, what do I need to do? So yesterday we attended a very beautiful workshop, rather a talk. We attended a talk by Dr. Venumani, who was the founder of Thyrocare. And unki baaton se we were very inspired. Tushar and I were very inspired. And one thing that I take back from his talk is, Pallavi, focus, focus, focus. And just destroy all the distractions. Don't get caught into distractions. So 3 things that I learned is focus, no distractions, and frugality. These are the 3 things that I learned from him, and these 3 words that are coming back with me. Once we came back from the talk, awareness to wellness now has a structure. So I feel very happy to share that structure with all of you. The structure being, awareness to wellness is a big umbrella where we are only talking of mindsets and shifts in mindsets. When we are talking from different shifts in mindsets, we are saying that mindset is something that rules or is the foundation of anything that we do. Now, an individual almost always, rather 99.99999% of the times, has challenges only in 2 areas of life, money and love. इसके अलावा कहीं और प्रॉब्लम नहीं है. या तो पैसा नहीं है, या तो प्यार नहीं है. And therefore, we then compartmentalize these 2 broader areas of our life. इन करियर नहीं चल रहा, या पेरेंटिंग नहीं हो रहा, या पैसा नहीं आ रहा, या कम्युनिकेशन गड़बड़ है, या तो फिर कॉर्पोरेट्स बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी ढंग से नहीं चल रही है. रिलेशनशिप्स, लव रिलेशनशिप्स इन जनरल, सो फ्रेंडशिप्स कहिए या रोमांटिक रिलेशनशिप्स कहिए, all these are the ones that are challenged. And yes, of course, the health. So health is one thing that can be, because I'm not managing my health, or I'm not able to take care of my health because I have a lack of money, or I have a lack of self-love, and therefore health goes for a toss. This is our principle at Awareness to Wellness, and therefore we have now compartmentalized all our workshops and all our training programs in 7 different compartments. So we are talking of coaching, mindset coaching for parenting, mindset coaching for careers, mindset coaching for abundance, mindset coaching for health, mindset coaching for relationships. Then we are looking at leadership coachings, and definitely communication, reflective communication coaching. These are the 7 broad areas that we are going to have our workshops and our retreats and our one-on-one coaching for. So that helps Tushar, me, and everyone else to understand that the only one thing Awareness to Wellness does is shifting mindsets in different areas of life. We are just a mindset coaching company. Awareness to Wellness is helping people understand their beliefs, which are faulty, modify them, and come back more powerful with more workable belief systems. This is who we all are looking at being. So now to come back to the first thing that we are discussing, requesting Susheen, Sonal, and Sanika, अगर हो सके तो please आप videos on करें. I don't like talking to black screens. Sushim said something. Sushim, do you want to tell us what you asked on the group? Sanika says she has to get ready for work and therefore she's not.
Okay. What is Sushim saying? Professional life can be. Sushim, are you there? Tushar, please will you check on Ginger? Okay. Professional life can be another aspect which I assume a lot of people have problem with. Yes, and professional life is coming from leadership, not taking ownership. Again, when we talk of professional life, why do you have a profession? Sushim, please turn on your video. I want to have this conversation with you. Sushim, good morning. Sushim Gayab. Okay. Professional life is one aspect that people would have problem in. And I am saying only two areas of problem. प्यार नहीं है, पैसा नहीं है. So now let's come. How is this professional life a part of प्यार and पैसा? मुझे बताओ सुशील. When you say professional life में problem है, तो किस तरीके के problems हम देख रहे हैं? Maybe like people like pulling down each other. ओके, इसका मतलब प्यार नहीं है इसलिए नीचे खींचना हो रहा है ना, या कंपटीशन है इसलिए नीचे खींचना हो रहा है? Competition. ओके, कंपटीशन क्यों है? Because क्योंकि सबको like प्रमोशन चाहिए, I guess. करेक्ट. पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सुशीम को प्रमोशन मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे सुशीम को नीचे खींचना है? क्या वजह हो सकती है मेरे मन में कि मैं सुशीम को नीचे खींच रही हूं और उसको प्रमोट होने नहीं दे रही हूं? या तो मेरी काबिलियत नहीं है, आई एम नॉट केपेबल ऑफ दैट प्रमोशन. डू यू अग्री? और आई फील प्रमोशन तो एक ही बंदा जाएगा, तो दो लोग कैसे दावेदार हो सकते हैं? और इफ आई एम अग्रीइंग कि सुशीम की दावेदारी है उस प्रमोशन में, तो देन आई एम सेइंग मैं और सुशीम इक्वल है. एंड इफ आई एम सेइंग मैं और सुशीम इक्वल है, इसका मतलब आई एम अग्रीइंग कि सुशीम और मेरी काबिलियत एक जैसी ही है. हाँ, मतलब मे बी कुछ एस्पेक्ट्स में मैं अच्छा हूँ, कुछ एस्पेक्ट्स में वो अच्छे है. करेक्ट. सो आई एम सेइंग ऑन एन एवरेज इट इज अप टू द बॉस टू डिसाइड कि कौन सा एस्पेक्ट को प्रमोट करना है, कौन से एस्पेक्ट को अभी इग्नोर करना है. हाँ. करेक्ट. तो इसमें मैंने अगर तुमको खींचा नीचे, तो किसकी काबिलियत दिखती है? व्हाट डज इट से अबाउट मी एज अ पर्सन? हाँ, बट ऑन द सरफेस किसी एक्सटर्नल पर्सन को तो वही पर्सन दिखता है ना, क्योंकि वो पर्सन अपने आप को शो ऑफ कर रहा है. Correct. या And वो that is why where we are selling our dugout program, which is leadership coaching, where we are helping each one to become a leader in its own space. So suppose when we are looking at promotion, there is one space here, but then there is some other space here also. I am only looking at मुझे ये वाली promotion चाहिए, मुझे ये वाली promotion चाहिए. But if you keep holding your space here, probably this person will get promoted here and this person might get promoted here. Right? मुझे दुख कब हो रहा है कि मेरा पाँव खींच रहा है, मेरे को वो प्रमोशन नहीं मिल रही है, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि अरे मेरी काबिलियत देखी नहीं, मुझे नीचे खींचा. अभी मुझे नीचे खींचा में आप अपने साथ क्या कॉन्वर्सेशन कर रहे हो सुशीम? यू आर टेलिंग योर सेल्फ के अरे इफ आई डोंट गेट दिस प्रमोशन आई विल नॉट गेट एनी प्रमोशन. और यू आर बीइंग जिद्दी एंड यू आर सेइंग आई वांट दिस प्रमोशन राइट नाउ बिकॉज जितना मैंने एफर्ट अब तक यहां पहुंचने के लिए डाला है, दैट एफर्ट डिजर्व्स मी टू बी देयर. या दैट इज राइट. करेक्ट. आपने ये देखा कि जो दूसरा बंदा था उसने एफर्ट डाला तुमको नीचे खींचने के लिए, जो एक्स्ट्रा एफर्ट डाला उसने. किसी ने हाँ. नीचे नहीं खींचना चाहिए इज अ बिलीफ इन सुशीम्स हेड विच विल नॉट लेट हिम ग्रो. तुमने क्यों नहीं खींचा उसको नीचे? तुम क्यों नहीं दिखे उसको, बॉस को? हाँ, नहीं, मोस्टली वो इट्स मोर अबाउट लाइक
शायद वो नीचे खींच नहीं रहा है, इट इज मोर लाइक वो अप शो ऑफ कर रहा है और मैं वो शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, करेक्ट। तो अगर वो तो शो ऑफ इट कर इज। रहा है तो उसमें गलत क्या है सुशील? मेरे पास एक सोने की घड़ी है और मैं शो ऑफ कर रहा हूं, देखो मेरे पास सोने की घड़ी है, देखो देखो मेरे पास सोने की घड़ी है, देखो देखो मेरे पास सोने की घड़ी है, तो उसमें गलत क्या है? नहीं मतलब ऑल द टाइम, एक बार अगर बोले तो ठीक है कि ही इज लाइक ही वांट्स पीपल टू एक्नॉलेज इट, तो नो, वो आई वॉन्ट यू टिल टू दैट पॉइंट रिमेम्बर। ऑफ व्यू। आई एम नॉट सेइंग इट टू अक्नॉलेज, आई वॉन्ट यू टू नो कि मेरी औकात है सोने की घड़ी रखने की, तेरी नहीं है। ये दिखाना है मुझे। तो मुझे मेरे बॉस को जताना है कि देखो देखो मेरे पास ये क्वालिटी है, देखो देखो मेरे पास ये क्वालिटी है, देखो देखो मेरे पास ये क्वालिटी है। सुशील के पास तो कुछ नहीं है। So what I'm trying to do is influence my boss. That means he has that one more quality bigger than Sushim, जहां पे वो लोगों को influence कर सकेगा. हम्म। And that's a एंड leadership वो quality. and he repeatedly says it so that people remember it. मुझे याद दिलाना पड़ता है ना कि बाबा ये मेरी क्वालिटी देखो, ये मेरी क्वालिटी देखो, ये मेरी क्वालिटी देखो. When we go into that mode, understand, Sushim, again, why are we doing this? पल्लवी ने शुरुआत में बोल दिया, we are talking of reflective communication. ये क्या सुशीम के साथ थेरेपी सेशन कर लेगी? It's not a therapy session. It is a demonstration of what we are saying to ourselves about situations, how we perceive different situations, how we go about making life miserable for the most important person of my life. Who is that, Sushil? My parents. ए चल रे, छोड़, झुट्टा. uh, गर्लफ्रेंड आने दे, बीवी आने दे, फिर मैं पूछूंगी पेरेंट्स अभी इतने ही इंपॉर्टेंट है क्या? Relationship with yourself. Yeah. Sushil, your relationship with the most important person is you. क्योंकि only you is going to live with you for the rest of your life. और कोई नहीं जीने वाला तुम्हारे साथ. पहले दम से लेके आखिरी दम तक एक ही इंसान है जो तुम्हारे साथ रहेगा. It is you. In whatever condition. So should you not be the highlight of your life? हम अपनी ही जिंदगी में खुद को ही साइडलाइन करके उसको साइड हीरो बना देते हैं और हीरो किसी और को बना देते हैं. माँ बाप को हीरो, कुत्ते को हीरो, हस्बैंड को हीरो, बहन को हीरो, किसी और को हीरो, फिल्म स्टार्स को हीरो, भगवान को हीरो. Am I not the hero of my life? So if you are the hero of your life and you are not doing justice to that hero, कहीं ना कहीं हम में ही कमी रह गई ना. Okay, now let's take the same example of promotion. Okay, ये मैंने बोला कि सुशील खुद के साथ क्या कम्युनिकेशन कर रहा है. I demonstrated the example of the conversation Sushil is having with himself. Can Sushil just take a small break and say कि आप उस बंदे के बारे में क्या बोल रहे हो? What is the conversation about that other person? When he's taking away the limelight or when he's taking away your a promotion that you deserve to. um, उसके बारे में um, हमारी ओपिनियंस बनती है ना सुशील, कि अरे कितना जेलस बंदा है, उसने मेरी टांग खिंचाई कर दी. The belief is that people should not pull each other down. हाँ मतलब वो ही कि वो शो ऑफ कर करके आगे आगे चला गया, लाइक सॉर्ट ऑफ. करेक्ट. सो अगर कोई शो ऑफ करके आगे चला जाता है, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, I don't know.
इसका ये मतलब होता है कि ही इज अ बैड पर्सन जो सबको इक्वल चांस नहीं मिलने दे रहा है अपनी काबिलियत के हिसाब yes, से। yes, 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 करेक्ट। yes. पर शो ऑफ करना भी तो एक काबिलियत ही है। Hmm. तो वो उस काबिलियत को एक्सरसाइज कर रहा है। और ऐसा नहीं है ना सुशीम कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है शो ऑफ करने की। Hmm. कंफ्यूजन है सुशीम को? यू आर नॉट लाइटिंग द स्पॉटलाइट ऑन यू राइट नाउ। No. या I am actually I'm not the kind of person who हु is विल in शो the ऑफ। spotlight. या आई नो। Yeah. सो द आइडिया इज हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं? वी आर थिंकिंग दैट दिस पर्सन शुड नॉट डू दिस बिकॉज ही इज डूइंग दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक जो वो दिखा रहा है, इसकी वजह से मेरा हक छीना जा रहा है। हाँ मतलब शायद अगर वो नहीं करता then I would have had the like the person in front of us would have been able to see clearly. So But another belief that you have here is that your boss is an idiot and he can't gauge कि qualities कौन सी चाहिए to be in that promoted place, and that is why he's an idiot. He doesn't see कि ये बंदा show off कर रहा है, and if he's choosing him, तो my boss is an idiot. uh नहीं, sort of he's blinded. He's not an एक ही idiot. बात है ना। अब ब्लाइंडेड पर्सन कौन होता है? जो पूरी अवेयरनेस में चॉइसेस नहीं करता है। Yes, yes. Correct? So Hmm. you are saying I am in awareness and these two other people are not in awareness. My boss is not in awareness and this other person who's showing off also is not in awareness. Yes. तो ये सच्चाई है कि ये आपका थॉट है? What if I am the boss and say Vidushi and you are competing for the position in the office and I choose Vidushi because she's showing off? I can do it. I can finish Sushim. I know that. इसलिए मैंने विदुषी को ही चुना। So the point is सुशीम को मैंने इसलिए नहीं चुना because the position on which I am promoting Vidushi, that position requires Vidushi or the leader or the person promoted to show off. क्योंकि हम जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाते हैं तब दैट पोजीशन रिक्वायर्स अ डिफरेंट स्किल सेट। ये स्किल सेट जो मुझे यहां तक लेके आया है वो मुझे यहां सस्टेन नहीं करेगा। So I have to have something different in me to be here. And that difference could be the ability to show off. The ability to show off comes from the thought that she can show people कि देखो 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 मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। तो she can advertise about my company, advertise about what we do and bring more clients. जो सुशीम नहीं करेगा बिकॉज सुशीम विल से नहीं नहीं अपने को अपने मुंह से क्या तारीफ करनी है, अपने प्रोडक्ट अपने बारे में बात करेंगे। But after certain period, you want to advertise, no? Why do you buy a certain brand of soap for bathing and not a XYZ company? आप कपड़ा धोने के लिए कौन सा साबुन यूज करते हो? I think Tide. ओके, टाइड का पाउडर तुमने लिया और मैं बोल रही हूं देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड धनटक, उसका पाउडर Hmm. है, उसको लो, वो बहुत अच्छा है। और टाइड और धनटक दोनों का प्राइस एक ही है, तो आप धनटक का पाउडर यूज करो। व्हाट विल यू डू सुशीम? नहीं मतलब मैं वो ही यूज करूंगा which I'm familiar with. And how did you get familiar with Tide? Because Wait, maybe in the you got familiar because of advertising. अगर hmm, टाइड ने एडवर्टाइज किया ही नहीं होता तो टाइड क्या और धनटक क्या दोनों उतने ही अननोन होते आपके लिए। hmm, So you are using Tide because of the familiarity, because of the advertisements, because of the marketing. What Vidushi might do to get the promotion is advertising herself. hmm.
She is being seen by the boss more. If she's seen by the boss more, then the familiarity of Vidushi gets higher and therefore she gets promoted. So can Sushim also say, अच्छा मैं भी अपने आप को promote करूंगा? Now see, the same thing of showing off. Showing off क्या होता है? Advertisement. So Yes. Vidushi is advertising herself. Sushim is not advertising himself. And then if somebody chooses Vidushi over Sushim, Sushim is complaining, अरे लेकिन मेरा क्वालिटी तो बेटर है, मेरा क्वालिटी हमें कैसे पता? How do we know? Sushim needs to advertise himself. Making sense, Sushim? Yes. ये मैंने कल के टॉक में सीखा कि अवेयरनेस टू वेलनेस हैज नॉट गॉन प्लेसेस बिकॉज उसने एडवर्टाइज नहीं किया है, मार्केटिंग नहीं किया है. शी इज वेटिंग फॉर एवरीबडी हु इज अटेंडिंग हर टॉक्स to talk about A2W to people. And definitely people aren't talking so much about the group, about A2W, because we don't see new participants coming in. We don't see new people joining the community. So then what does Pallavi have to do if she has to reach the masses? Advertise. And advertisements can be in many ways. No, it doesn't have to necessarily be a advertisement that I'm running. Maybe I should do more of these talks, invite more people, maybe ask you all to bring 10 different people to a talk. Have I ever done that? No. Because in our own head, the space that A2W is creating is such a humble place कि we should not be advertising for it. फिर तुम्हारे में और किसी advertised company में क्या फर्क है? वो तो पैसा बना रहे, तुम तो ज्ञान बांट रहे हो. These are our own belief systems about who someone should be, and they are faulty because belief systems come from irrationality. It's a very strong statement I'm making. I'm saying all belief systems are irrational, but they help me to survive because a belief system helps me have a boundary. When I have a boundary, I know where not to cross. But within the boundary, there is a lot of flexibility. हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि बाउंड्री के इस तरफ करेक्ट, बाउंड्री के उस तरफ रॉन्ग. It's not right, wrong, good, bad. It just says boundary के इस तरफ I am safe, boundary के उस तरफ is opportunity, which I have not explored as yet. Does that make sense to you, Yes. Sushil? Yes. Does that It make does. sense to Sonal, Sanika, Vidushi? Boundaries are only meant to protect us. Lived we are- Sushim's life Yes, for ma'am. 7 years. Lived. Yes, makes Completely sense. get it. Because when we look at a boundary, we are only putting up a boundary because we want to save ourselves from an overwhelm. An overwhelm of what all are the possibilities outside. Yesterday, when I put boundaries for each baby of awareness to wellness, I felt safe as a mother. Because now my children have the freedom to explore within their boundaries. And इधर वाला बच्चा उधर नहीं जा रहा है, उधर वाला बच्चा इधर नहीं जा रहा है, and that chaos is something that Pallavi is managing. Does it make sense? Tushar, your opinion on this? I feel that definitely having healthy boundaries help to grow. They don't restrict you. They don't limit you. In fact, they help you grow. I agree. And when I say boundary, हमारे खुद के दिमाग में वो बाउंड्री हमने इतनी हार्ड बना दी है कि हम जब उसको क्रॉस करते हैं, हम अपने आप को मॉरली जज करते हैं. We say, अच्छा हमने बाउंड्री क्रॉस करी, we are so unethical, we are so wrong, we should not be doing this, we should not be doing that. It's a boundary for my safety. Once I explore everything within this boundary, I can move the boundary thoda पीछे and explore a little more of my periphery. वरना तो वही चीज कर करके बोर्डम आ जाएगा. Does that make sense to you, Sushim?
Sushim is still thinking. I mean it's it's like a ingrained belief system which I have. So like just a few minutes of you telling it might not I make agree. sense to I me. completely agree. But the Like point for is, years and years, I have stuck to this idea of right and wrong and being like uh, not being over the top or things like that. So I mean, yeah, that is something I have inside me, but then now as you say it, it's completely opposite to what I yeah, it's believe. 180-degree shift. Yes. Definitely. And I'm thankful to you, Sushim, for bringing this topic up. Because often we are not even aware that boundaries के अंदर हम locked है and freedom is outside the boundary. The boundary Hmm. that Sushim is holding is I should not be this person. I should not be talking so much about myself. I will seem arrogant. I will मेरे बारे में ऐसा लोग सोचेंगे मैं ऐसा दिखूंगा मैं वैसा दिखूंगा मैं ऐसा रहूंगा मैं वैसा रहूंगा. There is one saying that has gone with me for a very long time. The ship is safest in its harbor, but that is not where it was meant to be. आप अपने आप को इस परसीव्ड नेगेटिविटी से बचाते रहोगे तो ग्रोथ होगी ही नहीं. अगर ग्रोथ करनी है तो आपको अपनी बाउंड्री को थोड़ा क्रॉस करके आगे जाना पड़ेगा. फिर पता चलेगा कि बाउंड्री के उस तरफ भी ग्रोथ है. इट्स नॉट नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इट इज जस्ट अबाउट जब हम स्कूल में जाते हैं सुशील और आपने जब 6th स्टैंडर्ड या 5th स्टैंडर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ा है and suddenly you get exposed to the 10th standard syllabus, what will happen to you? Uh, I will get scared. You'll get scared and overwhelmed. ऐसे लगेगा कि अरे यार कौन से जंगल में लाके छोड़ दिया मुझे. And the Yes. fear of I will not survive will kick in and then start to make me anxious. The anxiety will come from the fact I'm not good enough, I'm not good enough, I'm not good enough, I'm not good enough. But now I put a boundary कि तुमको सिर्फ 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी है. And you're saying, अरे this is too easy. मैं तो 7th स्टैंडर्ड में हूँ. 4th कर लूंगा, 5th कर लूंगा, 6th कर लूंगा, 7th कर लूंगा. All that is good. There's nothing wrong in it. 7th में आके आपको कुछ सीखना पड़ता है. जब आप वो सीख लेते हो तब उसकी बाउंड्री क्रॉस करके 8th स्टैंडर्ड में जाते हो. तब 8th स्टैंडर्ड को एक्सप्लोर करके उसमें से अच्छा बुरा कुछ भी करके आप फिर पास होके 9th स्टैंडर्ड जाते हो. You're crossing boundaries. It's not like 7th स्टैंडर्ड is Hmm. correct and 8th स्टैंडर्ड is wrong. It's not like 8th स्टैंडर्ड is correct and 9th स्टैंडर्d is wrong. Hmm. We are in the journey of life. And life हमें नए नए लेसन सिखा रहा है. आपको पता है बचपन में हमें सिखाया गया था सुशील कि ओनली क्रॉस व्हेन यू सी द रेड लाइट फॉर द मैन, रेड लाइट फॉर द कार्स एंड ग्रीन लाइट फॉर द मैन. उसके पहले क्रॉस मत करना, एक्सीडेंट होता है और मर जाते हैं या फिर एक्सीडेंट होके लग जाती है. यस और नो? Yes. राइट. डू यू फॉलो दैट गाइडलाइन एवरी सिंगल टाइम इन लाइफ? No. क्यों? वो तो बाउंड्री दी थी ना आपको बचपन में. मे बी वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से पता चला कि वो हमेशा it doesn't apply everywhere or all the आई time. लव यू फॉर दिस स्टेटमेंट सुशील. आपने क्या कहा? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टीचेस यू कि हर बार यही चीज करना गलत नहीं होता या हर बार वो चीज करना सही भी नहीं होता. तो हाँ. आप जब वो करते हो तब आप सोच सकते हो कि अच्छा ये इस हद तक करने पर ठीक है पर इस हद के बाद करना ठीक नहीं है. हाँ. हाँ वही मतलब सिचुएशन देख के. करेक्ट. पर बचपन में तो हमको रूल बना के बता दिया कि इसको ऐसे ही जीना है आपको. हमें बचपन में सिखाया गया ए को इस तरह ही लिखो,
बी को इस तरह ही लिखो। हमने कितने सारे वेरिएशंस निकाल दिए, वरना हैंडराइटिंग डिफरेंस तो होता ही नहीं ना किसी का। हाँ अगर हर बंदा ए को उसी तरह लिखता, बी को उसी तरह लिखता, सी को उसी तरह लिखता, तो सबके हैंडराइटिंग्स तो एकदम जेरोक्स कॉपीज होते। पर वो जेरोक्स कॉपीज नहीं है, क्योंकि हमने उसी बेसिक एजुकेशन वेरिएशन लाया। Does that make sense? Tushar, will you come and check on the dogs, please? Does it make sense to you, Sushim? And thank you for bringing this topic up because आज का तो session अपना एक अलग है, because we are talking of reflective communication. And this is reflective communication. The communication you do with yourself, the communication you do about the others, and the perception about the environment actually decides what am I telling myself, what am I perceiving of the others, and how am I defining my happiness or my sorrow. One thing, ma'am, though, it is that maybe okay, like as per the situation or as per like whatever in like we accept the fact that that rule doesn't apply all the time or everywhere, but still at the back of the mind it is there that what I have done is, I mean, it is wrong, but it is still I have No, done it. wait, So then we stop, just forget stop, about it. stop. What I have done, I would prefer not to do, but Yeah, I had to do it. yeah, I would prefer not to do. Yeah, that is a better way of So I would so- have preferred not to cross that boundary, but I had to do it because me first. मुझे अपने आप को शोकेस करना है बॉस को, Hmm. और अगर बॉस सिर्फ यही लैंग्वेज समझेगा तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि भाई ये एबिलिटी मेरे पास भी है, आई एम चूजिंग नॉट टू शो यू दिस एबिलिटी, बट इफ दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न, ओके लेट मी शो यू दिस एबिलिटी ऑफ शोइंग ऑफ. Hmm. Make sense, Sushi? I Yeah. would prefer not to show off in front of people because I come from a very humble background. I love to be humble and I would want my work to speak for me. But if I want that promotion, अगर वो promotion मेरा intention है, what I'm hearing Sushim say is my humility is more important than the promotion I will get. या तो you be humble, या तो get promoted. If you can choose between these two, what would you choose? Your humility or the promotion? No, being promoted. Then lose your humility. Humility को छोड़ो Hmm. कि भाई मेरे को promotion चाहिए, तो humility को छोड़ो, चलो हम ऊपर चलते हैं. Hmm. Not wrong, no? We have to choose. When we have to choose between this or that, the choice comes from what is important. So if the choice was no, my humility is more important, promotion नहीं मिला, चाटुगिरी करके promotion नहीं लेना, that condition applicable है कि चाटुगिरी करके promotion मिलता है. शायद ये फंडा वो दूसरा बंदा पहचान गया है, and that is why he is doing what he is doing, and there is a payoff for being this person. If that ability did not pay off and he would not get the promotion, वो छोड़ देता ना शो ऑफ करना. पर वो शो ऑफ करने से उसको एडवांटेज मिला है, उसको प्रमोशन मिला है, तो वो शो ऑफ करना ज्यादा करेगा, बिकॉज दैट मीन्स ये ट्रेट मेरे काम आया. बिकॉज कोई भी ट्रेट उसका सुशील, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. करेक्ट, और कोई भी ट्रेट, नो ट्रेट इज राइट और रॉन्ग और गुड और बैड. इट इज हाउ आई लुक एट इट. अब मैं किस तरफ से उसको देख रही हूं, उस तरफ से वो राइट और रॉन्ग, गुड और बैड होता है. आई एम सेइंग एवरी ह्यूमन बीइंग हैज टू बी हम्बल. नहीं बॉस, ये वैल्यू सिस्टम मिडिल क्लास के फैमिलीज ने दिया है इनको, हमको. पर वही अगर आप रिच फैमिलीज में जाओ तो ह्यूमिलिटी इज नॉट अ ट्रेट दैट इज वेलकम. इट इज लाइक दिखाओ सबको तुम्हारी औकात क्या है. तो क्या हुआ तुमने अगर एक्सीडेंट किया था, तो क्या हुआ तुमने सर्वेंट से रूडली बात किया तो
सर्वेंट की औकात एक है, तुम्हारी औकात देखो। तुम गरीब घर की लड़की नहीं ला सकते अपने घर में। हम्बल ह्यूमिलिटी क्या होता है? सो अंडरस्टैंड कि हर एक का बैकग्राउंड, हर एक का कंडीशनिंग बहुत अलग होता है, एंड वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर definitions, meanings that we have in our head, in our critical filter. सबको पता है what is the critical filter? The critical filter is what defines the division between the conscious mind and the subconscious or the unconscious mind. ये हमने बहुत महीनों पहले एक टॉक में किया था ना तुषार? Vidushi is also saying yes, so I'm assuming yes. किया था, बहुत क्लियरली किया था, 2-3 बारी किया था. So the critical filter is defined by the 4 areas that give us the rules: the socio-economic, educational, and religious background from where we come, the society in which I grew, the economic conditions in which I have come from, the educational background from where I have come, and then my religion. And these are all guidelines to live my life. They are not rules. They're only guidelines. When they become strong, they become rules. When they become stronger, they become values. And it's very wrong of me to say that because these are my values, you should also follow them. Because my values, my rules work for me. If they don't work for you, you can skip. या तो हम दोस्त रहेंगे या तो हम दोस्त नहीं रहेंगे. I feel due to this thing about we sticking to the rules, maybe it causes like arguments in relationships also It with always anybody. does, सुशील. किसी भी चीज को आप जो गाइडलाइन है उसको अगर रूल बना दो तो हम सही गलत में चले जाते हैं. I feel a relationship is more important than the rights and the wrongs. When I say a relationship, या तो उसको पकड़ के रखना जरूरी है इसीलिए हम राइट रॉन्ग में चले जाते हैं, या तो उसको छोड़ देना मुश्किल है या जरूरी है इसीलिए हम राइट रॉन्ग्स में चले जाते हैं. आज सुबह की बात है, मेरी मम्मी ने मेरे को डांट दिया क्योंकि मैंने अपने छोटे बेटे को डांटा. She overheard a conversation I had with my son. He lives in Australia and he was talking to me, and I said, if you want to talk to me, sit down in one place and talk to me. You can't be doing 10,000 things when you're talking to me, because वो फोन ऐसे 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 constantly वीडियो कॉल पे ऐसे 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 हो रहा था. And it was so annoying and irritating because उसका चेहरा छोड़ के बाकी सब कुछ दिख रहा था मुझे. So if you're so busy, don't make a video call, only make an audio call, or if you are too busy to talk, then switch off the audio call also. Don't make a call. So when I said this to her, she got angry. अरे बेटा है, तुमको समझना चाहिए, तुम माँ हो, ये है वो है. I said stop. मैं माँ हूं तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं. He can take me for granted. 1.5 महीने बाद अगर उसने मेरे को कॉल किया है, can I not expect him to sit down for 10 minutes and talk to me? Is that not a value system I taught him? So then how can he say that 1.5 महीने में मुझे तेरे साथ 10 मिनट बात करने का टाइम नहीं है? तो that is very clear, I am not important to you. And if I am not important to you, I would rather not talk to you. क्योंकि just because you are my son does not mean that we have to talk to each other because तू माँ मैं बेटा हम धर्म संकट में. No भाई, please connect with me if you love me. And if you love me, there are ways to show that you love me. Sit and patiently listen to me. I was listening to you when you were talking gibberish and nonsense as a kid. जब तुम कर रहे थे तो मम्मी बैठ के हाँ बेटा सही है, आप एकदम सही हो कर रही थी आपके साथ. And I believe I'm still not talking gibberish. I'm still talking sense. Tell me if any of you feel that I was being irrational or illogical in my expectation. No, मैं irrational तो नहीं थी, you मैं were fine. illogical. No. I would do the same. And it's not like he's a 5, 6, 7, 8, 10-year-old, 12-year-old. He's a 25-year-old. So can you not expect an adult to treat another adult with respect? And here,
My annoyance was not with my son because we've made our choices clear. तो ठीक है. I was annoyed with my mother because she thought I was being a child and I don't know how to treat my child. And that is why the annoyance that you are not respecting my choices as an adult. Does this make sense? Hello, people, listen, no. So the idea of coming to today's talk was to understand that when we communicate, when we talk to people, there are aspects of who I am. What is my relationship with myself? Whether I think I am a nice person or a not so nice person. If I am a not so nice person, what are the conditions that are applicable to me that I can consider myself a good person? Because I'm saying if I do this, I am nice. If I do this, I am not nice. So that relationship, the context in which my conversation or my relationship is taking place. And the same is applicable to the other person because the other person is also coming from the same phase. Look at the dynamics and the permutation combination of the whole conversation. It's not only me, my internal landscape versus my external landscape, and the other person, his internal landscape and his external landscape. So if there are 6 things in play, look at the power play that happens in the reflective communication. And then we say, this man doesn't understand me only. Or this woman doesn't understand me only. Oh, she was my best friend. How could she do this to me? The idea is we are expecting people to mind read us. We don't offer clarity in our communication. And because there is no clarity in the communication, we end up being conflicted and hurt. So from now on, whenever we are communicating either with ourselves or with another person, remember there could be an irrational belief playing out from inside or from outside. And the irrational belief is only a matter of changing my perception of what is. I might be looking at the elephant's ears while I might be required to look at the elephant's trunk. Does that make sense? Lovely. So thank you so much. That's all for today. Reflective communication skills, the keywords, relationship with myself, relationship with another, the rationality, the irrationality, the perception of the situation defines the content and the context of the communication. So with such great thoughts, thank you so much for being here today.